Cu will make iron. ये आगे का क्वेश्चन है. ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स, यहाँ पे टेबल पूरा दिया हुआ है, उसको तुम लोग याद करो ऊपर से नीचे तक. Similarly, non-metals, if you check, you will also find that there are non-metals which are placed. ऊपर से नीचे तक जैसे जैसे हम आएंगे, एक्सेप्ट करने की ताकत धीरे 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 कम हो रही है. OH is at the bottom. OH की एक्सेप्टेंस ताकत सबसे कम हो, यानी कि इसकी डोनेट करने की ताकत सबसे ज्यादा है. अगर हम कंपेयर करें आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स, पोटेशियम की जो डोनेट करने की जो क्षमता है, जो डोनेट करने की जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की जो शक्ति है, दैट इज वेरी 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 हाई. दैट मीन्स पोटेशियम K प्लस अगर है, इफ इट हैज, सी K विल कन्वर्ट इनटू K प्लस बाय डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन. इट इज हाईएस्ट, बहुत ज्यादा है. Now, if you provide 1 electron to K plus, it will convert into K because वो neutral atom बनेगा. Similarly, Cu को अगर हम लें, Cu converts into a cation by donating 2 electrons because its valency is 2. Cu minus 2e will convert into Cu plus 2. Now, when Cu plus 2 will get 2 electrons, it will convert Cu plus 2 plus 2 electron will convert into Cu. But the difference is this, बहुत अच्छे से समझो कि अगर मैंने पोटेशियम आयन और Cu आयन K plus Cu plus 2 को दोनों को छोड़ दिया और दोनों को एक बार सामने इलेक्ट्रॉन दे दिया, सबसे पहले खाना कौन खाएगा? Cu खाएगा. एक सेकेंड. Cu, हेलो, कि जो the donation capacity of Cu plus 2 is less than potassium, so the accepting quality will be more than K when we are comparing. Suppose Cu अकेले है तो no problem, Cu has got no option, Cu ही आपका चेंज होगा. Suppose पोटेशियम है तो no option, पोटेशियम है. लेकिन if there are two, K भी जा रहा है कैथोड पे, Cu भी जा रहा है कैथोड पे, and there is a competition between two, कौन डिस्चार्ज होगा? क्योंकि दोनों के सामने ये ऑप्शन है कि आप K एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और K बन जाएगा, Cu 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बन जाएगा. तो in that case Cu will be preferred because the preferential reduction or reduction potential of Cu is low than potassium. Yeah, in this words you can explain that the position of Cu in electrochemical series of metals is lower than potassium. So when two or more than two cations or two or more than two anions are there, then there is a selective discharge. Selective discharge means it will be decided who is going to charge. You cannot decide. If only one is there, fine. One cation, one anion, they will go and they are going to go get discharged. But if more than two are there, then there will be selective discharge. This is one first rule. There are 3 rules. I'm talking about 3 rules. This is the first rule, that the discharge of the ions depends on the position in the electrochemical series. Agar electrochemical series if the position is low, then the other one that is going to get discharged. Second rule says that okay, fine. Suppose if I say position is okay. Now position always will not determine this. Suppose the concentration, suppose if I take the example of NaCl, namak, NaCl. Now when NaCl will be dissolved in water, आप 2 solution बना सकते हो. One weak, not weak, one dilute solution in which water is more, and one concentrated solution where NaCl is more. तो अगर आपने dilute solution की बात की, if you are talking about dilute solution, what will happen? That dilute solution, if you are talking about, what is going to happen? That NaCl will have, एक
second. This will dissociate to give you Na plus Cl. H2O, this is going to give you H and OH. What have I told you? That here the H ions will be more than Na ion. OH ion will be more than Cl ion. Now, if you check in the reactivity electrochemical series, the position of H is lower than Na. So definitely H will be, both will go because they are cation. So they will go to cathode. Here H will accept the electron and to convert into H atom, nascent hydrogen atom, and 2H will form hydrogen gas. In this case, OH, because Cl and OH both will go, and OH will donate one electron, OH will be formed, 4OH will form 2SO plus O. Here, Cl and OH both will go, and Cl, because the concentration is more, Cl is going to discharge and Cl2 gas. What we are taking actually, we are taking copper sulfate solution, और ये जो Cu है, ये आपका CuSO4, this will break into two parts, Cu plus 2, sulfate minus 2. चूंकि इसमें water भी हम dissolve कर रहे हैं, you have to have a aqueous solution. This H2O will decompose or dissociate into H ion and OH ion. Now few drops of H2SO4 हम डाल रहे हैं so that there is no hydrolysis. So this will break into 2H plus SO4. The color of the solution is blue due to the presence of citric ion. So if you check the cations are cupric ion and H ion. This is also H. If you check the anions are sulfate and OH. This is also sulfate. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि why are we not using HNO3, HCl or any other acid? See, if you take HNO3, यहाँ पे आपको सल्फेट नहीं मिलेगा. Here you will get nitrate. यहाँ सल्फेट है, यहाँ नाइट्रेट है, तो again there will be a hindrance in the electrolysis because already we have discussed two rules. So therefore we prefer an acid which has got the similar non-metal than the electrolyte. Similar है, sulfate and sulfate. Now the color of the solution is very, very important. This is. Now when we take platinum, so the cations, that is cupric or hydrogen, दोनों migrate होंगे. Cupric, if you check the position in the reactive your electrochemical series, hydrogen से नीचे है, therefore cupric will accept the electron and convert into copper. Anode is made up of platinum. So anode will attract sulfate and hydroxyl, and hydroxyl position is lower. So OH will donate one electron, convert into OH. 4OH will form 2H2O plus O. So oxygen gas will be liberated. Now slowly you will see over the time the color which is blue, which is due to cupric ion, and this cupric ion is already converting into copper. So in the solution, cupric ion will be exhausted. As a result, the blue color fades. When blue color fades? When we are using inert anode which is made up of platinum. Why it fades? Because the concentration of cupric ion is becoming low and low. Now, in another case, when you are using active anode, that is made up of copper. Now, cathode is copper, anode is copper. Cathode doesn't make any difference. Only anode is which decides. So, cathode will attract the cation. So, cupric ion will convert into copper. Now, anode will attract sulfate and hydroxyl, both. But none of them are going to discharge. Why? यहीं पे क्वेश्चन आएगा why? Because हमने एनोड जो लिया है, जो कॉपर है, that is very very reactive, और ये खुद जो है क्या करने लगता है, ये अपने एटम्स, अपने एनोड में से जो एटम्स है वो निकाल के it converts into cupric ion. So
The number of cupric ion are converting into copper. Same number of copper atoms from this copper anode converting into cupric ion. तो जितने आपके हट रहे हैं उतने ही आपके ऐड हो। उससे क्या हो रहा है कि जो ब्लू कलर है वो फेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्लू कलर है वो क्यूप्रिक आयन कॉन्सेंट्रेशन से है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यूप्रिक आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन सेम, एज अ रिजल्ट द ब्लू कलर सस्टेन्स। This is your three rules which decides what is the preferential your discharge of ions. Now when you are taking lead bromide, you will find, I have already discussed this, थोड़ा सा हम इसको ले रहे हैं। When we are taking lead bromide in solid condition, you will find that nothing happens. Solid condition में no electrolysis. I've already told you why. Because the lead and bromine ions, they are held with each other with a very, very strong force of attraction called as electrostatic force of attraction. Now, the vessel which we take, that is made up of silica. क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलिका क्यों लेते हैं भैया? सिलिका हम इसलिए लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, नॉन कंडक्टर होगा, उसको बहुत हाई हीट चाहिए उसको फ्यूज करने के लिए, बहुत हाई हीट रेजिस्टेंट होगा। दीज आर द क्वालिटीज। अगर हम कुछ ऐसा ले लेंगे कि अच्छा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ब्रोमीन है और आपका लेड है, तो ये लेड और ब्रोमीन से भी रिएक्ट नहीं करता है, तो इसीलिए वी प्रेफर your silica. Now the next part is yours. I hope everybody has taken your syllabus they have downloaded. आपका जो syllabus है, let me tell you, stoichiometry में is vapor density is there, relation to relative molecular mass, molecular mass is there, molecular mass, that is 2 into vapor density, that on the basis of this you will get the numericals. Simple empirical formula and molecular formulas questions, the numericals you may get. Percentage composition of a compound you will get, reduction, and masses of combining elements you will get. Percentage composition जब निकलेगा तो masses भी निकलेंगे. Now in the test you will definitely get the numericals. So you will keep a paper and pencil in front of you. Answers will be given. So definitely you have to see which answer is correct. You have to know. तो एटॉमिक मासेस आपको नहीं दिए रहेंगे, एटॉमिक मासेस आप याद करो। एटॉमिक मासेस जैसे सपोज मैंने बोल दिया KNO3 का, आप KNO3 में K का परसेंटेज निकालिए। अब K का परसेंटेज निकालने के लिए आई हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ KNO3. In that case I should know the atomic mass of K, atomic mass of nitrogen, atomic mass of oxygen. I should know how to find out molecular mass of KNO3. अब K का मास अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100 करके हमको देखना पड़ेगा, तब हम जो भी ABCD में ऑप्शंस है वो हम सही कर पाएंगे। Vapor density into 2 is molecular weight. I may give you the molecular weight is this, what will be the vapor density, or vapor density is this, what will be the molecular weight. मॉलिकुलर फार्मूला से आपको इंपेरिकल फार्मूला निकालना आएगा, इंपेरिकल फार्मूला से मॉलिकुलर फार्मूला निकालना आएगा, इंपेरिकल फार्मूला भी निकालने के लिए आएगा। These are the type of questions which you will get. I will not give you any direct questions. You will not get halwa. I'm telling you children, I'm already telling you the question paper is standard. Standard का मतलब आपको नेशन वाइज आपको प्रिपेयर करना है। ये जो आप लोग 9 तक बड़ा आराम से पढ़ लेते थे, अब ऐसा नहीं है, आपको सब्सटैंशियल तरीके से पढ़ाई करनी है। You have to go through the chapter very well. Next is your electroplating.
Now, electroplating is the process that is actually layering of a thin film over a metal by another metal. अब इसी में देखो ट्रिक है, ये अगर मैंने बोला तो आई विल गेट जीरो। ये जो लेयरिंग है थिन फिल्म है, वेरी करेक्ट। लेकिन अगर मैंने सुपर मेटल, बेसर मेटल, बाई इलेक्ट्रोलिसिस ये सब वर्ड्स नहीं यूज किए, मेरा डेफिनेशन गलत है। I should tell you, or I must highlight that the layering of a thin film on a baser metal, layering of a thin film of super metal on a baser metal with the help of electrolysis is known as electroplating. Why we do it? Why we do it? We do it to enhance the beauty. We do it to enhance the ethical, that aesthetic value, to ornamental value, to give a rich look, to prevent rusting. All these are the reasons. Where we do it? We do in all the ornamental objects. We do in the automobiles. We do for all the your domestic, the toiletry items, the bathroom fittings. Everywhere we use this, and the gadgets, the motor parts. In everywhere we do the electroplating. Now, electroplating is done, so there will be certain thing. There will be certain thing. You cannot just take anything and you can start getting it. No. First of all, the object which has to be electroplated should be cleansed very nicely. Very nicely. All the grease, all the dirt, everything should be clean. Why? हर में ए why आएगा. Why? Because if you don't do it, the layering will be not formed. The layering will not be. आपने देखा होगा व्हाइट वॉश के टाइम में क्या करता है मिस्त्री, मजूरा क्या करता है, पूरी दीवार को स्क्रब करके खाली करता है। जितने पहले साल वाली जो पपड़ियां हैं, जो चूना लगा हुआ है, जो कलर लगा हुआ है, उसको साफ करता है। साफ करने से क्या होगा, जो ग्रिपिंग होगी, जो भी आप उस पर आप पेंट करोगे, उसकी ग्रिपिंग प्रॉपर होगी, थिन लेयर बनेगा। मोटा अगर लगा दोगे तो गिर जाए। तो दिस इज बिकॉज ऑफ, हमेशा याद रखोगे कि पेंटिंग के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, उससे आपके दिमाग में आएगा वाई का आंसर देना। सेकेंड थिंग, always you have to make this object as cathode, because cations are shifted, they are migrated towards cathode. So when they will go to cathode, they will discharge. So cathode will be actually deposition of the cations will occur at cathode. इलेक्ट्रोलाइट आप क्या लोगे, इलेक्ट्रोलाइट आपको वो लेना है जिसमें वो कैटायंस हो जिसको आप चाहते हो कि जाके वो डिपॉजिट। अगर आपका सिल्वर प्लेटिंग है तो इलेक्ट्रोलाइट सिल्वर प्लेटिंग, सिल्वर वाली होंगी। अगर आपका कॉपर प्लेटिंग है तो कॉपर होना चाहिए। अगर आपका निकल प्लेटिंग है तो निकल होना चाहिए कैटायन में। तो इलेक्ट्रोलाइट शुड बी अकॉर्डिंग। इफ आई वांट टू गो फॉर अ निकल प्लेटिंग, आई कैन नॉट टेक ए इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कंटेन्स कॉपर। कॉपर सल्फेट हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स में हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर निकल प्लेटिंग द इलेक्ट्रोलाइट शुड बी कॉपर सल्फेट। व्हाट विल यू डू? You have to mark it as a wrong statement and then underline the term copper sulfate and make it correct, nickel sulfate. This is the second thing. Third, what type of electricity will you use? There are two types of electricity. One is AC current, second is DC current. We will always use DC current. AC current will keep on altering the electrodes. पहले एक एनोड होगा, अगले टाइम में वही कैथोड बन जाए। So we cannot afford to do that. We will always use DC current. Now the current which we are using should be a very low voltage. Low voltage for a longer period of time. Low voltage for a longer period of time. So this is DC current. Second thing, we will but these are the all things. And moreover, a superior one more thing, that the metal which we want to be deposited, that should be made as anode. A thick plate, suppose silver plating करना है तो thick plate of silver should be made as anode. Copper plating कर रही है तो thick plate of copper should be made as anode.
तो जिसको चढ़ाना है वो एनोड बनेगा, जिस पे चढ़ना है वो कैथोड, ये हमेशा याद रखना। नाउ let us talk about silver plating. See here I have taken an active anode, that is silver, block of silver, और ये हमने एक आर्टिकल लिया है, और ये आर्टिकल यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है ये सोडियम अर्जेंटो साइनाइड. फॉर्मूला इज दिस, नेम इज sodium argento cyanide. It is a complex salt. Now, in place of this, I can take sodium AgNO3, silver nitrate, but we will never prefer that. यहाँ भी आता है why? Because silver nitrate, the process will be too fast. When the process is too fast, then deposition is not even. ये जो silver sodium argento cyanide है, we will take water and we will take an acid, few drops of HCl. Wait, Ashutosh wants to ask some question. Sodium argento cyanide will be the electrolyte, water will be there, and kindly go through the dissociation reaction. Already once I have explained. Same way for nickel plating, you will be taking the electrolytes, same thing will happen. You will be taking nickel over here, nickel sulfate will be the electrolyte, nickel block will be the anode, cathode will be the article, and as here you have taken sodium argento cyanide, तो ये आपका ब्रेक होगा सोडियम में, सिल्वर और साइनाइड में, वाटर आपका ब्रेक होगा HOH में, HCN ब्रेक होगा H और CN में. दो आपके वो हैं कैटायन से, सोडियम और हाइड्रोजन, और आपका कैथोड जो है वो आपका आर्टिकल है. Cathode will be attracting CN and OH. Now here what will happen? Cathode will be attracting sodium, hydrogen and silver. Silver भी है. Silver's position is the lowest, so silver is going to deposit. क्या है आपका आर्टिकल है. Anode आपका CnOH both will be attracted, but your anode is made up of silver. So therefore silver is going to take part in the reaction and Ag will convert into Ag ion. So धीरे धीरे क्या होगा, ये डिसॉल्व होता जाएगा क्योंकि Ag निकालता जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट में और ये Ag इसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है. तो ये आपका जो सिल्वर है ये पतला होता जाएगा और यहाँ पे प्लेटिंग चली जाएगी. सेम विल हैपन हियर आल्सो. हम यहाँ पे आपका निकल का ब्लॉक ले रहे हैं. धीरे धीरे ये निकल जो है, क्योंकि ये एक्टिव एनोड है, तो ये आपका निकल जो है इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा और निकल आपका ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपकी मोटी होती जाएगी. सी द रिएक्शन ओवर हियर, निकल सल्फेट, निकल एंड सल्फेट. बेटा ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं आएगा. H2O, H और OH, H2SO4, 2H और SO4. कैथोड निकल आपका हो रहा है और यहीं पे निकल भी आपका निकल रहा है. बिकॉज दिस एनोड बेस, यहाँ पे सल्फेट और OH दोनों जा रहे हैं, बट none of them will discharge. Nickel is itself will change into ions. Now I want you all to ask question. Raise your arm. Ma'am, I have a confusion. In our book it is said for electrolysis of concentrated NaCl solution that at cathode hydrogen will be discharged. NaCl concentrated. Yes ma'am. हाइड्रोजन नहीं. Ma'am, it is written. हाँ, वो बहुत सारी चीजें इसमें गलती दी होंगी. So ma'am, that is wrong, na? हाँ हाँ. Okay ma'am. Anybody else? Use sulfuric acid in electrolysis of copper sulfate because copper sulfate is already present in electricity. Copper sulfate is acidic. Is it acidic? Is it important to be acidic? No. Is it acidic? Tell me. Is it acidic? What I'm asking you answer. So you need to avoid hydrolysis. Therefore, we have to add, or you can understand in simple language that to increase the conductivity of the electricity. This is all happening with the electricity. Conductivity आपको बढ़ाना है, इसलिए you need few drops. पूरा ज़्यादा नहीं, 2-3 drop. Okay. You cannot use. Just now I have said no.
Ma'am, I was disconnected for just a few minutes. हाँ, तो H2SO4 नहीं डाल लेंगे, अगर आप HNO3 डालेंगे तो NO3 आएगा ना, NiN. Yes, So ma'am. you cannot keep on. So what will they will start interfering. तो आपको वही एसिड यूज करना है जिसका नॉन मेटल रेडिकल इलेक्ट्रोलाइट के बराबर है. Electrolyte. हाँ. Thank you. Anybody else? Ask questions. I'll be happy. Used for permanent hair removal treatment and also for growing